वाणी चल रही थी 6 मार्च 1967. The vani was narrated on March 6, 1967. दूसरे पेज के मध्य में. In the middle of the second page, बात चल रही थी. the topic was going on. जो गीता का भगवान है, The one who is the God of the Gita, वो गोल्डन एज में ले जाते हैं. takes to the golden age. और वो झूठी गीता है. And that one is the false Gita. इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य गोल्डन एज से आयरन एज में आ जाता है. By listening and reading which, the human beings go from the golden age to the iron age. हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान तथा पतन. It is said in Hindi, the rise and the fall of Bharat. ये गीता का भगवान के ऊपर सारा मदार है. Everything depends on the issue of the God of the Gita. गीता के भगवान को न पहचानने के कारण Because of not having recognized the God of the Gita, साकार का नाम डाल दिया. they inserted the name of the corporeal. ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी ऐसे ही होता है. The same happens in the Confluence Age world of the Brahmins. निराकार शिव भगवान उवाच होना चाहिए. It should be written, the words of the incorporeal God Shiva. उसकी जगह साकार कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा का नाम डाल दिया. Instead of this, they inserted the name of the corporeal Krishna, alias Dada Lekhraj Brahma. पहले मुरलियों में लिखा होता था शिव बाबा याद है. Previously, it used to be written in the murlis. Do you remember ShivBaba? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद लिखा जाने लगा पिता श्री ShivBaba याद. After Mama had left the body, they started to write, do you remember Pita Shri ShivBaba? पिता श्री माना जो पिता बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है. Pita Shri means the father who will become elevated later on. बाद में श्रेष्ठ तो कृष्ण की सोल बनेगी. The soul of Krishna becomes elevated later on, जब नई दुनिया बनेगी. when the new world will be established. क्योंकि वो तो It is because नर से प्रिंस बनती है जन्म लेकर के. when he is born, he becomes a prince from a man, फिर बाद में नारायण बनेगी. and later on he becomes Narayan. लेकिन जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है इसी जन्म में पुरुषार्थ करके, However, the one who becomes Narayan directly from a man in this birth through making efforts वो अव्वल नंबर है. is the number one. उसमें मुकर्रर रूप से शिव का प्रवेश होता है. Shiva enters him in the form of the appointed chariot. इसलिए वो ही गीता का भगवान है. This is why it is he who is the God of the Gita. वो गीता का भगवान That God of the Gita झूठी गीता को सच्ची गीता बनाकर जाता है. goes away having made the false Gita into the true Gita. यज्ञ के आदि में भी Also, in the beginning of Yajna, वही झूठी गीता सुनी जाती थी they used to read the same false Gita और उसके सच्चे अर्थ सुनाई जाते थे. and they used to explain its true meaning. वो वाणी लोप हो गई. Those verses disappeared. प्यू की वाणी कही जाती है. They are called the verses of the Father. बाद में वही कृष्ण की गीता बन गई. Later on, it became the Gita of Krishna. गीता का भगवान कृष्ण हो गया. कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज. Krishna had become the God of the Gita. Krishna alias Brahma Dada Lekhraj, जिनके मुख से वाणी तो निकली, from whose mouth the verses did emerge, लेकिन वो वाणी ज्ञानामृत का काम नहीं कर सकी. but those verses couldn't work
as the nectar of knowledge. जिस अमृत को पी करके देवता देवता बने, by drinking which the deities become deities. वो देवात्माएं कैसे देवता बनी? How did those divine souls become deities? कौन सा अमृत पिया? What nectar did they drink? अमृत तब बनता है जब मंथन किया जाता है. It becomes the nectar when it is churned. ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी मुरली निकली उसको ज्ञानामृत नहीं कहा गया. The verses which emerged from the mouth of Brahma were not called the nectar of knowledge. क्योंकि वो मंथन नहीं हुआ. मंथन न होने के कारण because they were not churned. Because they were not churned, किसी की कुछ भी समझ में नहीं आया. no one understood anything. ये असलियत क्या है, नई दुनिया कैसे बनती है और पुरानी दुनिया कैसे खलास होती है. About what the real truth is, how the new world is made, and how the old world is destroyed. भारत का उत्थान कैसे होता है, भारत का पतन कैसे होता है. How the rise of Bharat takes place, how the fall of Bharat takes place. वो ब्रह्मा के मुख से जो मुरली चलाई गई उसका मनन चिंतन जब मंथन हुआ. When the churning of the verses narrated from the mouth of Brahma took place, तो बात समझ में आती है it was understood कि उत्थान कैसे होता है और पतन कैसे होता है. राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन. how the rise takes place and how the fall takes place. The rise means the construction. इसका कंस्ट्रक्शन? The construction of what? कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी. The construction of the deity dynasty. 100% पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है. किसके द्वारा? The establishment of 100% peace and prosperity takes place. Through whom? शिव की 3 मूर्तियां गाई हुई हैं. 3 persons of Shiva are praised. लेकिन तीनों मूर्तियों में से एक ही मूर्ति सर्वोपरि है. But only one of the 3 is the highest. जिसका नाम शिव के साथ मिला दिया जाता है. The one whose name is joined with the name of Shiva. ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं. They say Brahma, Vishnu and Shankar. ब्रह्मा की मूर्ति का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया जाता. The name of person of Brahma is not joined with Shiva. विष्णु की मूर्ति का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया जाता. The name of the person of Vishnu is not joined with Shiva. शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है. It is said Shiva Shankar Bholenath. 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए. There is no deity among 330 million deities whose name would be joined with Shiva. एक ही 100% संपन्न पुरुषार्थी है. There is only one 100% complete effort maker जो पहले नर से नारायण बनता है who first becomes Narayan from a man और नारायण बन करके फिर नई सृष्टि की शुरुआत करने का निमित्त बनता है. and having become Narayan, he becomes instrumental in the beginning of the new world. इसलिए बोला That is why it is said कि राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी. किसका राइज? the rise means the construction of the deity dynasty. The rise of what? कहते हैं सूर्य का उदय हुआ. They say there was a sunrise. सूर्यास्त हुआ. There was a sunset. सूर्यास्त की यादगार कहाँ पर है? Where is the memorial of the sunset? माउंट आबू में बनाई हुई है. It has been constructed in Mount Abu, सनसेट पॉइंट. the sunset point. लेकिन वास्तव में सूर्य का उदय भी होता है. But actually there is the sunrise as well. वही परमात्मा शिव है जो यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के द्वारा संस्कृत की गीता का क्लैरिफिकेशन दे रहा था. That person through whom in the beginning of the yajna that Supreme Soul Shiva himself was giving the clarification of the Sanskrit Gita. वही दोबारा जन्म लेकर के
is born again. शिव सुप्रीम सोल Shiva Supreme Soul और गीता माता का जो चैतन्य स्वरूप चैतन्य आत्मा ब्रह्मा की सोल है, and the soul of Brahma, who is the living form, living and sentient soul of the Mother Gita. उसको मस्तक पर धारण करके Having taken him, it means the soul of Brahma, on the forehead, उनके द्वारा बोली हुई वाणी जिसे मुरली कहा जाता है, उसके एक एक वाक्य का हिज्जे हिज्जे करके समझा। he explains in detail each sentence of the verses spoken through him, which are called murlis. बात समझ में आएगी If the words are understood, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होगा। the construction of the new world will happen. समझ में नहीं आएगी If they are not understood, तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। the construction cannot take place. जैसे भक्ति मार्ग में As it is on the path of the religious devotion, रामायण का पाठ करते रहते हैं, they keep on reciting the Ramayana, गीता का पाठ करते रहते हैं। they keep on reciting the Gita. सिख लोग The Sikhs सुखमनी पढ़ते रहते हैं, keep on reading the Sukhmani, लेकिन उनके बुनियाद क्या है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई नहीं बता सकता। but except for the Supreme Father, Supreme Soul, no one can say what their deep meanings are. भगवान ही आते हैं When God Himself comes, तो वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। He explains the essence of the Vedas and the other scriptures. उस सार से होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी। The construction of the deity dynasty takes place from that essence. उस सार को कहते हैं गीता ज्ञान अमृत। That essence is called the nectar of the Gita knowledge. इसलिए This is why, इसी मुरली में पीछे बोला है just in this murli, before, it is said कि अभी माना सन 67 तक that now, which means until 67, गीता को ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, we won't call the Gita the nectar of knowledge, बल ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव की द्वारा वाणी आई। even though the verses narrated by Shiva came out from the mouth of Brahma. लेकिन वो मनन चिंतन मंथन न होने के कारण सार रूप नहीं निकला। However, the form of the essence didn't appear because they were not churned, और जब तक सार रूप नहीं निकलता है, and unless the form of the essence appears, तब तक हर मनुष्य आत्मा की सार स्वरूप बीज रूप स्टेज नहीं बन सकती। the seed-like form of the essence of each human soul cannot be created. वो सार रूप स्टेज बनती है When that stage of the form of the essence is created, तो 100% पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की दुनिया मनसा के अंदर स्थापन होती है। the world of 100% peace and prosperity is established in the mind. दुनिया में हर चीज पहले छोटे रूप में तैयार होती है, फिर बड़े रूप में तैयार होती है। Everything in the world is prepared in its small form at first, and later on, it is prepared in its big form. एक बार नई दुनिया की स्थापना हो गई, When the establishment of the new world takes place once, तो फिर 5000 वर्ष के बाद अर्थात कल्प के बाद फिर फाल होता है। then the fall takes place after 5,000 years. It means after a cycle. एक बार संपन्न स्टेज हो गई तो 5000 वर्ष तक वो चलती है। When it reaches the complete stage once, it lasts for 5,000 years. डेविल डायनेस्टी का फाल होता है There is the fall of the Devil dynasty 5000 वर्ष के बाद। after 5,000 years. तब तक डेविल डायनेस्टी द्वापर युग से बढ़ती चली जाती है। Till then, the Devil dynasty has been growing from the Copper Age. राइज और कंस्ट्रक्शन जीटी डायनेस्टी का होता है। The rise and the construction of the Deity dynasty takes place. जब सूर्य का उदय होता है तो राइज होता है।
When there is the sunrise, the rise takes place. कहते हैं गीता ज्ञान सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? सूर्य को. They say that first of all, God gave the knowledge of the Gita to whom did he give it? To the sun. सूर्य को दिया तो सूर्य का राइज होता है. He gave it to the sun, so there is the sunrise. वो सूर्य That sun संसार में उदय होकर के रोशनी फैलाता है. having risen above the world, spreads the light. वो ज्ञान की रोशनी, उससे संसार नया बनता है. Through that light of knowledge, the world becomes new. नई रोशनी से नई दुनिया बनती है. The new world is created from the new light. पाल के साथ डिस्ट्रक्शन लगना है. Together with the fall, destruction must start. दुनिया का नीचे गिरना माना डिस्ट्रक्शन. The falling down of the world means destruction. अभी डेविल डायनेस्टी का विनाश होता है. Now the destruction of the devil dynasty takes place. क्योंकि सूर्य को राइज हुए 5000 वर्ष फिर पूरे हो गए. Because full 5,000 years have passed again from the rise of the sun. अभी नई दुनिया बनती है, फिर कल्पवास फाल होगा. Now the new world is being made. Then the fall will take place after a cycle. एकदम परफेक्ट में लिखना चाहिए. It should be written on the very preface, जो कोई खोलने से ही पढ़े. so that when someone opens it, they should read ये सभी डेविल डायनेस्टी का अब फाल होने वाला है. that all the devil dynasties are going to fall now. एक है जीती डायनेस्टी One is the deity dynasty, और बाकी सब धर्मों की है डेविल डायनेस्टी. and all the other religions are devil dynasties. एकदम ये बात परफेक्ट में लिखनी चाहिए. This topic should be written at the very preface. तुम्हारा सारा मदार गीता पर है. Everything of yours depends on the Gita. क्या? What? एक ही गीता है जिसके ऊपर सारा मदार है. There is only one Gita on which everything depends. एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं. Thanks to one becoming pure, all become pure. वो सारी सृष्टि की माता है. She is the mother of the entire world. कौन? Who? श्रीमद् भगवत गीता. The Srimad Bhagavad Gita. जो सारी सृष्टि की माता है, वो कलयुग के अंत में आकर डेविल डायनेस्टीज के द्वारा खंडित हो जाती है. The one who is the mother of the entire world gets broken, adulterated through the devil dynasties at the end of the Iron Age. गीता इस समय पूरी खंडित की हुई है. At this time, the Gita has been completely broken. जड़ गीता की बात नहीं है. This is not the question of the non-living Gita. शास्त्र सर्वोपरि शास्त्र गीता है. The Gita is a scripture, the highest scripture. कागज की जड़ गीता शासन नहीं करती. The non-living Gita of paper doesn't rule. चैतन्य आत्मा है जो शासन करती है. There is some living soul who rules. और उससे जास्ती अच्छा श्रेष्ठ शासन कोई नहीं कर सकता. No one can rule in a better and more elevated way than her. वो गीता कैसा शास्त्र है? What kind of scripture is that Gita? कैसा शासन करती है? How does she rule? सब डेविल डायनेस्टी का विनाश She brings about the destruction of all the devil dynasties और डीटी डायनेस्टी की स्थापना करती है. and establishes the deity dynasty. स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है गीता माता. She becomes the instrument for opening the gate of heaven, the Mother Gita. और नरक की दुनिया खलास हो जाती. And the world of hell gets finished. इसीलिए बताया है That's why it was said कि जगदम्बा ही जगत की अम्बा के रूप में पूजी जाती है. that it is Jagadamba who is worshipped in the form of the World Mother.
उसे गीता माता कहो, जगदम्बा कहो, बाप एक। One may call her the Mother Gita. One may call her Jagadamba. It is the same. मुरली बोला ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। It was said in the Murli, actually this Brahma is your Jagadamba. जिस मुरली में बोला गया उस समय का वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया। Brahma of that time, when this was told in the Murli, left the body and went away. फिर वो गीता माता के द्वारा स्वर्ग का गेट कैसे खुलेगा? Then how will the gate of heaven open through that Mother Gita? मुरली में तो बोला माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ। It was said in the Murli, I cause the gate of heaven to be open through the mothers. ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। The gate of heaven is opened through Brahma. अब ब्रह्मा ने 68-69 में शरीर छोड़ दिया। But Brahma left the body in 68, 69. तो क्या झूठी बात बोली? नहीं। So did he tell a lie? No. वो गीता जो जगदम्बा के रूप में संसार में पूजी जाती है, That Gita is worshipped throughout the world in the form of Jagadamba. उस जगदम्बा के रूप का शरीर, That form of the body of Jagadamba. माना जड़त्वमय रूप, It means the non-living form. प्राकृतिक रूप जो प्रकृति जड़त्वमयी है, वो 5 तत्वों का पुतला है। The form of nature. Nature is non-living. That is the doll of 5 elements. जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। In which the soul of Brahma enters. और प्रवेश होकर के वही ब्रह्मा जो दाढ़ी मूंछ के रूप में नहीं पूजा जाता है, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती हैं। And having entered that very Brahma, who is not worshipped in the form with the moustache and the beard, of whom no temples are made, no images are prepared. वही सोल, That very soul, उस स्त्री चोले में प्रवेश करने के बाद पूजनीय बन जाता है। after entering into that female body, becomes worship worthy. वही जगदम्बा फिर जब तामसी रूप पकड़ती है, When that Jagadamba assumes her tamsi form देविल दुनिया के लिए, for the devilish world, तो सारी आसुरी सृष्टि का विनाश करने के लिए निमित्त बनती है। she becomes instrumental in the destruction of the entire devilish world. पहले ब्राह्मणों की दुनिया में आसुरी ब्राह्मणों का विनाश करने के लिए निमित्त बनेगी। Will she become first instrumental in the destruction of the devilish Brahmins in the Brahmin world? ये पहले बाहर की दुनिया में निमित्त बन जाएगी। Or will she become first instrumental in the outside world? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जो डेविल है, First of all the devils in the Brahmin world, चाहे बेसिक नॉलेज में है, चाहे एडवांस नॉलेज में है, whether they are in the basic knowledge or they are in the advanced knowledge. एडवांस नॉलेज में भी तो बीज रूप आत्माएं हैं सब धर्मों की। The seed souls of all the religions are present in the advanced knowledge, aren't they? जो भी धर्म है, उन सब की बीज रूप आत्माएं। There are the seed souls of every religion that exists. ऐसे ही बेसिक में, In the same way, in the basic knowledge, सब धर्मों की आधारभूत आत्माएं, there are the root souls of every religion. जो बीज रूप है, वही बीज जो जमीन में बोया जाता है, सड़ जाता है, जब वृक्ष पूरा होता है, बड़ा होता है, तो ऊपर जाकर के उद्धार मूर्त बनता है। The seed form souls are the same seeds which are sowed in the soil and decay, and when the tree grows up completely, they go upwards and become the salvation makers. सबसे ऊपर पहुंचता है, ऊंची स्टेज में। It reaches the very top, in the elevated stage. वो बीज रूप आत्माएं है उद्धार मूर्त। The seed souls are salvation makers. और जो जड़ें हैं, जो फाउंडेशन में रहती है, And the roots, those who remain in the foundation, वो है आधार रूप, are the support. जड़ें काटती जाए,
Supposing the roots are cut, तो वृक्ष टिकेगा क्या? will the tree remain standing? नहीं टिक सकता, It can't remain, क्योंकि वो आधार है, वो आधार चाहिए वृक्ष के लिए। because that one is the support, and the tree needs the support. और वो है उद्धार, And those are salvation makers. माने जो भी एडवांस पार्टी है, It means that the whole advanced party, उस एडवांस पार्टी के जो भी भांति है, वो सब उद्धार मूर्त है सारी दुनिया के लिए। all the kinds that are in the advanced party, all of them are salvation makers for the entire world. सारी दुनिया को नीचे से लेकर के ऊपर ले जाने वाले, माने ऊंची स्टेज वाले। They take the entire world from the lower stage upwards. That is, they are of the high stage. जिसकी खुद की ऊंची स्टेज नहीं बनेगी, वो दूसरों की भी ऊंची स्टेज नहीं बना सकता। The one whose stage isn't high can't create the high stage of the others. जो खुद आधारभूत होकर के रहता है, The one who himself remains as the support, फाउंडेशन बन करके रहता है, the one who remains as the foundation, वो दूसरों को भी सिखाता है कि थामने वाली बनो। he even teaches the others to become the ones who support or hold. जो भी बेसिक वाली आत्माएं हैं, उनमें जो फर्स्ट क्लास स्वरूप है चंद्रवंशियों का, वो आधारभूत है फर्स्ट क्लास। The Moon Dynasty, the first class from among the souls in the basic knowledge, are the first class support. वही आधारभूत आत्माएं Those supporting souls विजयमाला की मणके बनती, become the beads of the garland of victory. विजयमाला के मणके उन बीजों को आधार देते हैं। The beads of the garland of the victory give support to those seeds. टिकाऊपन देते हैं। They give durability. अगर आधार हिल जाए, If the support shakes, तो उसके ऊपर जो बीज है वो भी हिल जाएगा। then the seed which is on it will shake as well. ये आधार है, This is the support, ये इसके ऊपर आधे है, and on the top of this there is the one who takes the support. ये हिलेगा तो आधे भी हिल जाएगा। If this shakes, then the one who takes the support will also shake. तो धरणी माता, So the Mother Earth, जगत माता, the World Mother, प्रकृति माता the Mother Nature, या भारत माता, or the Mother of Bharat, उसका सेंट्रल प्लेस है दिल्ली। Delhi is her central place. ये दिल्ली के ऊपर सारी दुनिया का मदार है। The whole world depends on this Delhi. दिल्ली का परिवर्तन होता है If the transformation of Delhi takes place, तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। then the transformation of the entire world takes place. दिल्ली का पतन होता है If Delhi declines, तो सारी दुनिया का पतन हो जाता है। the entire world declines. ये दिल्ली दुनिया के अंदर एक ऐसा शहर है This Delhi is the only such a city in the world जिसके ऊपर सब धर्मों ने राज्य किए, where all the religions have ruled. लेकिन वो तो है जड़ दिल्ली। But that one is the non-living Delhi. उसके मानिंद कोई चैतन्य आत्मा भी है, There is also some living soul like her. वही चैतन्य आत्मा That living soul सारी सृष्टि की माता के रूप में भी है, is the seed of the entire world in the form of the mother. जो भी सृष्टि में माताएं हैं, कलयुग के अंत में आकर के उनकी दुर्गति हो जाती है। At the end of the Iron Age, the degradation of all the mothers in the world takes place. भारत माताओं की खास दुर्गति बनती है। The mothers in Bharat are particularly degraded. उनमें सबसे बड़ी से बड़ी माता है जगदम्बा, Among them, Jagadamba is the most senior mother. जिसको गीता माता कहा है। She is called the Mother Gita. उसमें कृष्ण का नाम डाल देने से उस माता की भी दुर्गति होती है और सारी दुनिया की भी दुर्गति हो जाती है।
By inserting the name of Krishna in it, both the mother and the entire world are degraded. अभी राइज ऑफ भारत होना है. Now the rise of Bharat must take place. भारत का उत्थान होना है. The rise of Bharat must take place. ये भारत का उत्थान तब होगा The rise of Bharat will take place जब गीता माता का उत्थान, when the rise of the Mother Gita takes place. और गीता का माता का तब उत्थान होगा जब गीता माता की बुद्धि में बैठे. And the rise of the Mother Gita takes place when it sits in the intellect of the Mother Gita. कि गीतापति भगवान कौन है. Who is the husband, the God of the Gita? पति साकार में होगा या निराकार में होगा. Will the husband be corporeal or incorporeal? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु The Supreme Soul points of light और उसके बच्चे बिंदु बिंदु आत्माएं. and his children point like souls. आत्माएं भी निराकार The souls are incorporeal और उन आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु भी निराकार. and the father of those souls, points of light, is also incorporeal. ये एक संबंध बनता है निराकारी आत्माओं के साथ निराकारी बाप का. The incorporeal father has only this one relationship with the incorporeal souls. संबंध दूसरे तब बनते हैं जब वो निराकार साकार में प्रवेश करता है. When that incorporeal enters into the corporeal, the other relationships are formed. चाहे ब्रह्मा में प्रवेश करता है चाहे प्रजापिता में प्रवेश करता है. Whether he enters into Brahma or he enters into Prajapita, तब ढेर सारे संबंध बन जाते हैं. then a lot of relationships are formed. तो जो संबंध बने हैं उनसे साबित होता है So it is proved on the basis of their relationships that are formed कि समान बंधन वाले होने चाहिए. that the equal parts are required. एक निराकार हो और दूसरा साकार हो तो संबंध स्थायी नहीं रह सकता. The relationship can't be lasting if one is incorporeal and the other is corporeal. अब माता तो साकार बन गई, Now the mother has become corporeal. साकारी स्टेज में आ गई. She has come into the corporeal stage. साकारी स्टेज माने देहभान की स्टेज, The corporeal stage means the body conscious stage. और देहभान की स्टेज जब बन जाती है तो विकृति बहुत आती है. And when the stage becomes body conscious, many defects appear. निराकारी स्टेज आती है तो आत्मा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाती है. When the stage is incorporeal, then the soul becomes incorporeal, without vices and ego. वो सारी सृष्टि की बीज रूप जगदम्बा, That Jagadamba, the form of the seed of the entire world, और जो रुद्रमाला का सर्वोपरि माता है माताओं के बीच में, who is the highest beat of the Rudramala among the mothers. उसकी दुर्गति होती है तो सब माताओं की दुर्गति हो जाती है. When she falls into degradation, all the mothers become degraded. उसकी सदगति होती है तो सब माताओं की भी सदगति होती है और साथ ही साथ When she is uplifted, all the mothers are uplifted, and along with this, जो भी दुनिया है, जो भी भारतवासी है, सबकी सदगति होती है. the entire world and all the residents of Bharat are uplifted. एक के पतित बनने से सब पतित और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं. Due to the degradation of one, all become degraded, and thanks to one becoming pure, all become pure. इतना मदार है गीता के ऊपर Such responsibility is laid on the Gita. और उस गीता की ये हालत कर रखी है. And the condition of that Gita has become such that क्या कह करके कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है. by having said what? That the God of the Gita is Shri Krishna, a child. अरे जो बच्चा है उसको गीता माता का पति बना देंगे तो इससे बड़ा कोई पाप होगा क्या? Would any sin be bigger than
that of making a child into the husband of the mother Gita. इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। There is no sin bigger than this one. ऐसे पाप आत्मा जिस धर्म में जाकर के बनने लगते हैं उसको कहते हैं नास्तिक धर्म। The religion to which such souls go and become sinful is called the atheist dharma. दुनिया का नास्तिक धर्म है सबसे आखिरी धर्म, लेनिन स्टालिन के द्वारा स्थापन किया हुआ रूस का, रसिया। The atheism of Russia is the last religion of the world, which was established by Lenin and Stalin. जहाँ ये पता ही नहीं लगता कि माँ कौन है और बहन कौन है। Where they don't know who the mother is, who the sister is. बचपन से ही जन्म लेते ही बच्चा जच्चा घर में पहुंच जाता है। From very childhood, just after being born, a child goes to a child care house. माँ बाप की छुट्टी तो अपनी नौकरी धोकरी करो। Free time for the parents. Go and do your work. बच्चा बड़ा होता है, हॉस्टल में डाल दिया जाता है, स्कूल में पढ़ाई पढ़ता है। When a child grows up, he is sent to a hostel and studies at school. जब तक पढ़ाई पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, माँ बाप को पता नहीं कहाँ क्या है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। As long as he studies, he stays at the hostel. The parents don't even know where he is and what's going on. This is the responsibility of the government. माँ का प्यार तो नहीं मिला, बाप का प्यार तो नहीं मिला। He didn't receive the motherly love. He didn't receive the fatherly love. प्यार व्यभिचारी मिला या अव्यभिचारी मिला? Did he receive the adulterated or the unadulterated love? व्यभिचारी प्यार मिला। He received the adulterated love. बच्चा बड़ा हो गया, ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया। When a child grows up, he is sent to a training school. ट्रेनिंग पूरी की, कहीं नौकरी में सही सेवा करो देश की। The training is completed, therefore serve somewhere at work for the country. अब उन माँ बाप को जिन्होंने 16 साल की अवस्था में, 18 साल की अवस्था में उस बच्चे को जन्म दिया था, Now would those parents who at the age of 16, at the age of 18 gave birth to that child, और वो 32 साल के 30 साल के हो गए माँ बाप, and those parents are now 30, 32 years old, और बच्चा 16-18 साल का हो गया, and the child is 16, 18 years, उनको पता पड़ेगा कि मेरा बच्चा कौन, और बच्चे को पता पड़ेगा मेरी माँ कौन? would they know who my child is? Will the child know who my mother is? तो ऐसा जुल्म हो जाता है। Such atrocities happen. ये जुल्म तब बंद होगा These atrocities will end जब ये बात बुद्धि में बैठे, when it would sit in the intellect ये आखिरी धर्म that those last religions जो बाद वाले धर्म आए हैं मनुष्यों के द्वारा स्थापन हुए, which came later and were established by the human beings, चाहे वो ब्रह्मा हो, whether it is Brahma, उसके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, चंद्रवंश की स्थापना हुई, through whom the establishment of the Brahmin religion took place, the establishment of the Moon dynasty took place, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी धर्म पिता हो, whether it is Abraham or Buddha or Christ or Guru Nanak, whichever religious father जिन्होंने भी उन्होंने धर्मों की स्थापना की है, who established their own religion, वो सब पतन के गर्त में ले जाने वाले बने। all of them became the ones leading them to the ditch of degradation. क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में ही जब तक ये न बैठे कि गीता का भगवान कौन, It is because unless the topic who is the god of the Gita sits accurately in the intellect of Brahma, तब तक कल्याण नहीं हो सकता, well-being cannot be there. और ब्रह्मा की बुद्धि में ही नहीं बैठेगा, And if it doesn't sit right in the intellect of Brahma himself, जो जगदम्बा में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को कंट्रोल करने वाला है,
who enters into Jagadamba and controls her intellect, तो जगदम्बा का उद्धार कैसे होगा? then how will the salvation of Jagadamba take place? ब्रह्मा है आत्मा Brahma is a soul और जगदम्बा है डब्बा, and Jagadamba is a box. जड़त्वमयी 5 तत्वों का पुतला। She is the non-living doll of 5 elements. इसलिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। For this reason, it was said in the Murli, the children living with me cannot recognize me. क्योंकि बुद्धि कैसी है? जड़त्वमयी बुद्धि है। It is because of the intellect. How is it like? The intellect is non-living. तो पहले ब्रह्मा की बुद्धि में पूरी पढ़ाई बैठे। So first of all, the complete study should sit in the intellect of Brahma. उस पढ़ाई का ये तंत्र बैठे The essence of this study should sit in it. कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। That Shiv Shankar Bholenath is the god of the Gita. गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। Krishna is not the god of the Gita. अगर गीता का भगवान कृष्ण है, If Krishna were the god of the Gita, तो फिर शिवोहम कह के बैठ जाते। then he assumes the position Shivoham. यज्ञ के आदि से ही ये पतन होना शुरू हो गया था। This decline had begun just from the very beginning of the yajna, जिसके द्वारा गीता का क्लैरिफिकेशन मिल रहा था, वो व्यक्ति गया। That person through whom the clarifications of the Gita were received left. और बाकी ब्रह्मा और ब्रह्मा की सरपरस्ती में पलने वाली जो भी आत्माएं थी, And Brahma, as well as all the souls fostered under the protection of Brahma, दूसरे धर्मों की, the souls of the other religions, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे 2500 साल से, Islamic, Buddhist, Christians, those who for 2,500 years went on getting converted into the other religions. वो सारी आत्माएं ब्रह्मा की रहबरी में पलने लगी। All those souls started to take sustenance under the protection of Brahma. तो दूसरे धर्म की आत्माएं ब्रह्मा को अपने कंट्रोल में कर दिया। So the souls of the other religions took Brahma under their control. जैसे आज की दुनिया में देखा जाता है, Just like it becomes visible in the today's world. पति खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे, If God forbid the husband leaves the body, तो बच्चे माँ को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। the children keep a tight rein on the mother. ऐसे ही ये फाउंडेशन पड़ गया। In this way, the foundation was laid. जो भी विधर्मी बच्चे थे, All the Vidharmi children, Vidharmi, the souls whose religion remains in the opposition to the father's religion. इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, The souls who get converted into Islam, Buddhism and Christianity. वो सब आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलने लगी। All those souls started to take sustenance in the lap of Brahma. उन्होंने ब्रह्मा को ही सपोर्ट किया। They supported only Brahma. बाप को सपोर्ट नहीं मिला, The father didn't receive the support. इसलिए वो गया। And for that reason, he left. इसलिए परंपरा पड़ गई। For this reason, the tradition was established पुरुष जो है वो सन्यासी बन जाते हैं। that a man becomes a sannyasi. क्या? What? माता सन्यासी नहीं बनती। The mother doesn't become a sannyasi. वो आत्माएं क्यों चली गई, बीज रूप आत्माएं? Why did those seed souls leave? उसका कारण मुरली में बताया। The reason for that was given in the murlis, कि उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए छोड़ के चली गई। that wasn't so much knowledge at that time, and that is why they gave up the yajna and left. अभी तो ज्ञान सारा खुल गया है। Now the entire knowledge has opened. अभी तो ज्ञान यज्ञ को छोड़ने की बात नहीं हो सकती। Now the question of giving up the yajna of knowledge cannot arise. तो उस समय से ही सारे ब्राह्मण परिवार का पतन होना शुरू हो चुका। So the degradation of the entire Brahmin family had already started from that very time. अभी
बात सारी खुल गई। Now everything has opened. जो भी गीता माता, चैतन्य गीता माता, The Mother Gita, the living Mother Gita, वो भी प्रत्यक्ष हो चुकी has been already revealed, और जो ज्ञान की गीता है उसका सार भी प्रत्यक्ष हो गया। and the essence of the Gita knowledge has been revealed as well. तो अभी बुद्धि में जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारा मदार गीता का आ जाना चाहिए। Therefore, now, the entire topic of the Gita should come into the intellect of all the children. बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं Having come, the Father narrates the true Gita. कि ये है सच्ची गीता। This is the true Gita. क्या है सच्ची गीता? What is the true Gita? गीता को माता कहा जाता है। Gita is called Mother. तो माता चैतन्य होगी या जड़ होगी? So, will the Mother be living or non-living? चैतन्य होगी। She will be living. और उस माता का गीता पति भगवान भी चैतन्य होगा। And the husband God of that Mother Gita will be living as well. तो जब तक इन माँ बाप को नहीं पहचाना है, So until that Mother and Father have been recognized, तब तक सारी सृष्टि का उद्धार और भारत का उद्धार नहीं हो सकता। the salvation of the entire world and the salvation of Bharat cannot take place. सारा मदार गीता पर है। The entire responsibility is on the Gita. रोज इस बात पर समझाते हैं। These topics are explained every day. बच्चे Children, मन मना भव। man mana bhav. क्या? What is it? मन माना मेरे, Man means my. मना माने मन में, Mana means in the mind. भव माना समा जा। Bhav means let it be held. मेरे मन के अंदर जो गीता का स्वरूप है, The form of the Gita which is in my mind. तुम्हारे मन के अंदर भी वो गीता का स्वरूप समा जाना चाहिए। That form of the Gita should be held in your mind as well. गीता कौन है? गीता पति भगवान कौन है? Who is the Gita? Who is the husband, God of the Gita? ये बुद्धि में जब तक नहीं बैठा है, Until this sits in the intellect, तब तक श्रेष्ठ संकल्प चले ही नहीं सकते। one will not be able to have the elevated thoughts. बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं Having come, the Father narrates the true Gita. और मनुष्यों के द्वारा झूठी गीता सुनाई जाती है। And the human beings narrate the false Gita. बाबा रोज इस बात पर समझाते हैं। Baba explains about this topic every day. देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। क्या? Renounce all the bodily relationships along with the body itself and consider yourself to be a soul. What? बच्चे की पैदाइश होती है, A child is born. तो जो पैदाइश हुई है बच्चे की, उसमें सिर्फ देह है। Is there only a body in the child that is born? यह बीज भी है, Or is there also a seed? आत्मा भी है। Is there also a soul? आत्मा भी है, तो धरणी माने देह भी है, मिट्टी भी है। There is a soul and there is also earth. It means a body, soil. धरणी का अंश कहाँ से आता है? Where does the part of earth come from? माने देह का अंश कहाँ से आता है? It means where does the part of the body come from? और बीज कहाँ से आता है? And where does the seed come from? बीज बाप से आता है। The seed comes from the father. और धरणी And the soil, माने देह का अंश माता से आता है। meaning the part of the body, comes from the mother. 5 तत्व कहो। You may call it the 5 elements. 5 तत्वों का पुतला माता के पेट में बनता है। The doll from the 5 elements is made in the womb of the mother. और बीज उसमें 4-5 महीने के बाद प्रवेश करता है। And the seed enters into it after 4-5 months. ऐसे ही होता है। It happens like this, doesn't it? माता का संपन्न रूप तैयार हुआ सन 68 में, 69 में, 18 जनवरी। The complete form of the mother was ready in the year 69, 18th January. 69 को
ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ का संपन्न रूप तैयार हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ा। In 69, Brahma left the body. Brahm means big, great, senior. Ma means mother. The complete form of the mother was ready and she left the body. लेकिन उस शरीर छोड़ने से पहले ही, but even before leaving the body, जो बीज बाप है, the father's seed, वो कारण या कारण यज्ञ में आ जाता है, comes to the yajna for some reasons. नजदीक आ जाता है, he comes close. उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश कर लेता है, the supreme soul enters him, लेकिन गुप्त रूप में, but in the hidden form. किसी को पता नहीं पड़ता, no one knows about it. जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो कोई को पता नहीं पड़ता, just like no one knows when a child enters into the womb. सन 76 में वो बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मनाई लिए थे। The year 76 was celebrated as the year of the revelation of that father. बाप प्रत्यक्ष हुआ, the father was revealed. तो जरूर बाप के साथ ही साथ वो जड़त्वमयी शरीर भी प्रत्यक्ष होता है। Therefore, that non-living body is certainly revealed together with the Father. जो जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। It gets revealed in the world in the form of Jagadamba. तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो और अपन को आत्मा समझो। So, renounce all the bodily relationships along with the body itself and consider yourself to be a soul. पहले बीज का परिष्कार करो। First of all, purify the seed. बीज को अपने स्वरूप में टिकाओ। Make the seed be fixed in its own form. देह को priority नहीं देनी चाहिए। The body shouldn't be given priority. देह को priority जब तक देते रहेंगे, as long as you keep on giving priority to the body, तब तक क्या होगा? what will happen? सुधार होगा। There cannot be growth. इसलिए इतना जोर दे रहे हैं कि अपन को आत्मा समझो और सब संबंधों को त्याग दो। मतलब This is why he is laying so much stress on that you consider yourself to be a soul and renounce all the relationships. It means माता का जो संबंध है, जहाँ से ये शरीर बना है, the relationship with the mother, where this body is made from, वो भी बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, shouldn't remain in the intellect either. सिर्फ बाप और आत्मा रूपी बच्चे। Only the father and the children in the form of the soul. ये स्टेज जब बनेगी तब बुद्धि में बैठेगा कि गीता का भगवान कौन और गीता माता कौन। Only when this stage is achieved, the topic who is the God of the Gita and who is the Mother Gita will sit in the intellect. इसलिए नारा दिया बच्चों को, एक शिव बाप दूसरा न। This is why the children were giving the slogan, only one Father Shiva and no one else. देह का सारा इतना पसारा है। The bodily expansion is so big. क्या? What? धरणी। Earth. जब डीटी डायनेस्टी थी, when the deity dynasty was present, तो धरणी छोटी थी या बड़ी थी? छोटी थी। भारतवर्ष में ही सिर्फ देवताओं का राज्य था। Was the land small or was it big? It was small. Only in the region of Bharat there was the kingdom of deities. जब माता पृथ्वी माता का रूप बड़ा होता गया, द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म आए, तो पृथ्वी का रूप बढ़ने लगा। From the Copper Age, when the form of the Mother Earth went on growing big, when other religions came, the form of Earth began expanding. पहले इस्लामी खंड आए, अफ्रीका, अरब देश वगैरह। In the first place, the land of Islamic religion appeared, Africa, the Arab countries, and so on. उसके बाद क्रिश्चियन धर्म खंड आए, वो भी समुद्र से ऊपर आ गए। After this, the land of Christian religion appeared. It emerged out of the ocean as well,
पहले जब द्वितीय डायनेस्टी स्थापन हुई थी तो सारी दुनिया पानी में डूब गई। At first, when the deity dynasty was established, the entire world had submerged into water. जिसको लोगों ने कह दिया प्रलय हो गई। People said about this there was the annihilation, total destruction. ऐसे उतनी प्रलय कभी होती नहीं है जो सारी दुनिया खलास हो जाए। Such annihilation that the entire world would be finished never happens. लेकिन 500-700 करोड़ की दुनिया में से सिर्फ 4 लाख आत्माएं ही बचे। However, if only 400,000 souls out of the world of 5-7 billions survive, तो ना के बराबर ही कहेंगे ना। it will be said that it is almost nothing, isn't it? इसलिए बोल दिया कि प्रलय हो गई। For this reason, they said that it was annihilation. वास्तव में ये पृथ्वी पूरी लय कभी होती नहीं है। In reality, this earth never gets destroyed completely. तो पहले पृथ्वी का छोटा रूप, So, at first, there is the small form of the earth. फिर दूसरे धर्म की आत्माएं जैसे जैसे उतरती जाती है, पृथ्वी का रूप बड़ा होता जाता है। And later on, as the souls of the other religions keep coming down, the form of the earth enlarges. ये अमेरिका, This America, 500 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं था कि अमेरिका नाम का वो कोई महाद्वीप होगा दुनिया। 500 years ago, people didn't have the faintest idea that the continent named America was in the world. वास्तव में था ही नहीं। In fact, there wasn't any. जब क्रिश्चियंस की जनसंख्या ज्यादा बढ़ने लगी, When the population of Christians began increasing, तब वो समुद्र तल से ऊपर आ गया it came to the surface from the ocean, और वहाँ क्रिश्चियन डायनेस्टी फैल गई। and the Christian dynasty spread there. ऐसे ही मुस्लिम डायनेस्टी, The same is in case of the Muslim dynasty, जो इस्लामियों से निकली, which came out from Islam. ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, Iran, Afghanistan, Pakistan, इराक वगैरह, ये सब मुस्लिम कंट्रीज, and Iraq, and so on. All these Muslim countries ये भी समुद्र तल से बाद में ऊपर आए। came out from the ocean later on. पहले तो अरब देश आए, The Arab country came first. लास्ट में अभी हमें ये ऑस्ट्रेलिया निकला, Australia emerged last of all. महाद्वीप। The continent. 300 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई महाद्वीप भी पृथ्वी पर है। 300 years ago, people didn't know that the continent named Australia was on the earth. तो कहा ये देह का सारा पसारा है। So it was said, all this is the expansion of the body. वो पृथ्वी जैसे देह है, That earth is like the body. वो जड़त्वमयी पृथ्वी है, That one is the non-living earth. और गीता माता चैतन्य पृथ्वी, And the Mother Gita is the living earth. ये सारा देह का पसारा है। All this is the expansion of the body. आत्मा तो आत्मा ही है, The soul is just the soul. उसका पसारा नहीं है। It doesn't have any expansion. हाँ, आत्मा का ममत्व देह में लग जाता है। But yes, the soul develops attachment for the body. तो ममत्व लग जाने से आत्मा अपन को देह समझ बैठती है। Therefore, due to this attachment, the soul considers itself to be the body. नहीं तो आत्मा आत्मा है, Otherwise, the soul is just the soul. देह अलग है, अलग चीज, और आत्मा अलग चीज। The body is a separate thing, and the soul is a separate thing. बाप कहते हैं इस देह के सारे पसारे को भूलकर The Father says, forget the entire expansion of this body. अभी अपन को आत्मा समझो। Now consider yourself to be a soul. ये बड़ी गलती है। This is a very big mistake. यज्ञ के आदि से ही ये गलती होती चली आई। क्या? This mistake has persisted just from the beginning of the yajna. What? किससे ये गलती हुई? Who had made this mistake? जो आत्मिक स्थिति में नहीं रह सके उनसे ये गलती शुरुआत हुई।
This mistake was initiated by those who couldn't remain in the soul conscious stage. सूर्यवंशियों से उतनी गलती नहीं हुई. The Sun dynasty didn't make such a big mistake. उनसे गलती होती है लास्ट में आकर के. They make a mistake in the very end. जब आखिरी जन्म में आके नीचे गिर जाते हैं. When having come in their last birth, they fall down. माया के प्रभाव में आ जाते हैं. When they come under the influence of Maya. तो बहुत ही विस्तार हो जाता है देह और देह के संबंध होगा. Because there is great expansion of body and the bodily relationships. माया का पसारा इतना ज्यादा बढ़ता है संसार में. The expansion of Maya grows so much in the world कि जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो भी उसकी चपेट में आ जाती हैं. that the souls of the Sun dynasty also fall victims to her. तो ये देह का पसारा यज्ञ के आदि से ही हो सारी सृष्टि के ऊपर छा गया. So this bodily expansion cast their shadow over the entire world just from the beginning of the yajna. ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर भी छा गया. It cast their shadow over the Brahmin world as well. जो भी 9 पुरियों के ब्राह्मण थे, 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण थे, उनमें से एक सूर्यवंश को छोड़ करके बाकी सब प्रभाव में आ गए. Except for only the Sun dynasty, all the Brahmins of 9 categories, the Brahmins who convert into 9 religions, came under the influence. किसके प्रभाव में? Under whose influence? माता के प्रभाव. Under the influence of the mother. वो यज्ञ की आदि की माता गई. That mother of the beginning of the yajna left. उसका स्थान ब्रह्मा ने लिया. And Brahma took over her position. दादा लेखराज टाइटलधारी ब्राह्मण. Dada Lekhraj, the holder of the title of Brahma. फिर उनके प्रभाव में सब आ गए. Then all came under his influence. बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा ही ब्रह्मा रटते क्या हो गया? Even in the basic knowledge, they repeat again and again only Brahma and Brahma. And what happened? सारा पतन हो गया. The complete degradation took place. और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी. And now, in the Brahmin world as well, सूर्यवंशी आत्माओं मात्र को छोड़ करके, except for the souls of the Sun dynasty, जिनके लिए मुरली में बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में, for whom it has been said in the Avyakt Vani, कि बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है. Bap Dada has given you children the gift of the new world. वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले सूर्यवंशी बच्चे, the children of the Sun dynasty who lay the foundation of that new world. वो तो फाउंडेशन डाल रहे हैं. They are laying the foundation. बाकी जितने भी बीज हैं एडवांस पार्टी के, all the other seed souls of the advanced party, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि, Islamic, Buddhist, Christians, and so on, वो सब उस माया के पसारे में, देह के पसारे में वसीभूत हो चुके. all of them had already been influenced by the expansion of Maya, by the bodily expansion. अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस नॉलेज में भी माँ ही माँ कह करके चिल्ला रहे. Now, in the world of the Brahmins, both in the basic knowledge and in the advanced knowledge, they are crying loudly, Mother, Mother. उनको ये पता नहीं है कि माँ का पहला रूप है. They don't know that the first form of the mother, जो संसार के सामने आवेगा, वो होगा डेविल दुनिया का विनाश. which will come in front of the world, will be that of destruction of the devilish world. जो माँ माँ कह करके चिल्लाने वाले हैं वही डेविल संप्रदाय. Those who cry loudly, Mother, Mother, are the devil communities. प्राप्ति किससे होती है? बाप से या माँ से? Whom does the attainment come from? From the father or from the mother? बाप से प्राप्ति. माँ को बाप ने स्वीकार किया. Yes, the attainment comes from the father. The father has accepted the mother. काहे के लिए? For what? अपना सहयोग देने के लिए. For assisting him. माँ सर्वोपरि नहीं है.
The mother isn't placed above all. सर्वोपरि बीज बाप है. The father, the seed, is placed above all. उस बीज रूपी स्टेज में ही सब बच्चों को टिकना पड़े. All the children will have to stay fixed in that seed form. जो उस बीज रूपी स्टेज में आत्मिक स्थिति में 100% नहीं टिक पाएंगे, Those who won't be able to stay fixed 100% in that seed form in the spiritual stage, उनको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी. they will be compelled to give up this world. जाओ परमधाम में रहो जाकर. Go and stay in the supreme abode. ये दुनिया स्वर्ग बनने वाली है. This world is to become paradise. नई दुनिया बनने वाली है. The new world is to be created. ये धरती माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है. This Mother Earth, whom the entire world has polluted. प्रकृति माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है. The Mother Nature, whom the entire world has polluted. ये गीता माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है. This Mother Gita, whom the entire world has polluted. जिन्होंने पोल्यूट किया है, Those who polluted her, विचार फैलाया है, who spread adulteration, वो अब इस सृष्टि पर नहीं रहे. won't remain in this world now. वो देह अभिमानी आत्मा है. They are body-conscious souls. 84 जन्म नहीं लेंगी. They won't take 84 births. 84 जन्म सिर्फ वो ही लेंगे जो पक्के बीज हैं. Only those who are real seeds will take 84 births. देखा जाए तो नई दुनिया जो बनेगी 100%, If one looks at things just like this, in the 100% new world which will be made, उसमें राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं भी, even the souls who will be born in the form of Radha and Krishna उनके भी 84 जन्म तो होंगे, will take 84 births. लेकिन कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा के भी 50 साल इस सृष्टि पर कम हो जाते हैं. But even such elevated souls like Krishna will have 50 years less in this world. वो सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है. They will receive the subtle body. तो जो 50 साल कम हो गया टाइम, Therefore, those whose time became shorter by 50 years वो ऑलराउंड तो नहीं हुए. are not all-rounders. ऑलराउंड पार्ट न बजा पाने के कारण वो हीरो हीरोइन के पार्टधारी नहीं बन पाते. They can't become the hero and heroine actors because they can't play the all-around part. तो संपूर्ण आत्मा बनना पड़े. So one has to become a complete soul. वो संपूर्ण आत्माओं को आकर के परमात्मा बाप पढ़ाते. Having come, the Supreme Soul Father teaches those complete souls. रूहानी बाप रूहानी बच्चों से आकर के बात करते हैं. The spiritual father comes and talks with the spiritual children. जो रूह की स्टेज में टिकते नहीं, देवान में आते हैं, उनसे बाप बात भी नहीं करते. The father doesn't talk at all with those who don't stay fixed in the spiritual stage and come into body consciousness. जैसे मुरली में बोला, मैं तुम बच्चों को सुनाने के लिए आता हूँ, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है. Just like it was said in the Murli, I come to talk with you children, and this Brahma listens in the meantime. इसका मतलब ब्रह्मा की भी पूरी बीज रूप स्टेज नहीं बनी. It means that Brahma hasn't attained the complete seed form either. तुम बच्चों की पूरी बीज रूप स्टेज बनती है जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हो. You children who sit and study face to face with the Father make the complete seed stage. कोई कहे कि ब्रह्मा में क्या शिव नहीं आता था? Someone may say, what? Didn't Shiva come into Brahma? ब्रह्मा में आता था, लेकिन वो तो माँ का रूप था. He used to come into Brahma, but that was the form of the mother. त्वमेव माता च पिता त्वमेव. Tvameva mata cha pita tvameva. त्वमेव माने तू, एक. Tvameva means two, you, one. वो एक आत्मा ही माता बनती है ब्रह्मा के द्वारा. That soul alone becomes the mother through Brahma.
वो एक आत्मा ही राम वाले व्यक्तित्व में अंतिम शरीर में चोले में प्रवेश करके पिता बनता है. And that soul alone, having entered into the last body of Ram, becomes the father. पिता से वर्षा मिलता है. One receives the inheritance from the father. माता से वर्षा नहीं मिलता. One doesn't receive the inheritance from the mother. इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी. This is why it was said in the Murli, nothing will be obtained from the worship of Brahma or Christ. There won't be any attainment at all. इस ब्रह्मा के चित्र को रखना भी फालतू है. Keeping this photo of Brahma is also useless. मुरली में बोला ना. He said in the Murli, didn't he? क्यों बोला? Why did he say so? क्योंकि बच्चों की लागत जो है वो मृदुल रूप जो माता का होता है उसमें जल्दी लग जाती है. It is because the children quickly become attached to the gentle form of the mother. माता का कैसा मीठा रूप होता है. The form of the mother is sweet like what? गंदे से गंदा बच्चा होगा, लूला लगड़ा अंधा कोड़ी चोर डकैत, उसको भी माँ अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती. The child may be the dirtiest, maimed, crippled, blind, leper, thief, dacoit, but the mother doesn't want to win him. माना? It means that न्याय नाम की चीज माँ के पास नहीं होती क्योंकि मोह लगा हुआ है. the mother doesn't know justice because she is emotionally involved. माँ साकार होती है और बाप निराकार. The mother is corporeal and the father is incorporeal. लेकिन वो बीज रूप होना चाहिए. ये सारे ही बीज नंबरवार हैं. But that seed form must be there. All these are seeds, number-wise. कोई में मोटा छिलका चढ़ा हुआ है और कोई में पतला छिलका चढ़ा हुआ है. Some are covered with a thick husk, and some are covered with a thin husk. कोई में देहभान का कम जन्मों का छिलका चढ़ा हुआ है. Some are covered with the husk of the body consciousness of few births. और कोई में देहभान का बहुत मोटा अनेक जन्मों का छिलका चढ़ा हुआ है. And some are covered with the thick husk of the body consciousness of numerous births. मान लो इब्राहिम की सोल आई 2500 साल पहले. Imagine that the soul of Abraham came 2500 years ago. तो उसने गर्भ तो जन्म नहीं लिया. He wasn't born from the womb. कैसे जन्म लिया? How was he born? किसी आधार मूर्त में प्रवेश करके जन्म लिया. He was born having entered into some root soul. तो जिस आधार मूर्त में प्रवेश करके जन्म लिया उसके संग का रंग उसको भी लगेगा और अपना संग का रंग उसको भी लगाएगा. He will be colored by the company of that root soul whom he entered and hence took birth. And he will color that one with his company. क्योंकि इब्राहिम जो ऊपर से आता है डायरेक्ट. It is because Abraham who comes directly from above. द्वापर युग की आदि में 2500 साल पहले उसमें तो ये संस्कार नहीं है. In the beginning of the Copper Age, 2500 years ago, doesn't have that sanskar कि अव्यभिचार बहुत ऊंची चीज है. of considering unadulteration as something very elevated. दृष्टि का अव्यभिचार, वृत्ति का अव्यभिचार, कर्मेंद्रियों का अव्यभिचार. The unadulteration of the eyes, the unadulteration of conduct, the unadulteration of the organs. इतनी ऊंची चीज है कि उससे जन्नत तैयार होगी. This is something so elevated that paradise is created from it. ये उनकी बुद्धि में नहीं है. He doesn't have it in his intellect. ये बुद्धि में बैठता ही नहीं. It doesn't sit in his intellect at all. तो ये संस्कार जिसमें प्रवेश करता है उसमें भी ये संस्कार भर जाते हैं. So this sanskar fills that one whom he enters. वो आत्मा भी वो द्वापर युग से ही देह अभिमानी बनने लग पड़ती है. From the Copper Age itself, that soul starts becoming body conscious. वो शास्त्रों का ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं ठहर सकता.
The knowledge of the scriptures can't remain in his intellect. और बैठता भी है तो उल्टे रूप में बैठता है. Even if it sits in it, it sits in the topsy-turvy form. किस रूप में बैठता है? In which form? ढेर की ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी की इस्लामियों ने. The Islamic gathered a lot of images. और वहां जाकर के उन मूर्तियों की पूजा करने लग पड़े अरब देश में. And having gone there, it means to the Arab countries, they began to worship those images. तो शुरुआत से ही बेविचार हो गया. Therefore, adulteration started from the very beginning. जबकि जो बीजरूप आत्मा थी उसने भारतवर्ष में सिखाया राजा विक्रमादित्य को एक की पूजा करना है. Whereas the seed soul taught King Vikramaditya in Bharat that he has to worship only one. एक का मंदिर बनाना है. That he has to make the temple of only one. तो भक्ति भी कैसी हुई? बेविचारी या बेविचारी? So what was the religious devotion like? Was it adulterated or unadulterated? आप बेविचारी भक्ति का फाउंडेशन पड़ा द्वापर युग की आदि में. At the beginning of the Copper Age, the foundation of the unadulterated religious devotion was laid. ये तो आज की दुनिया है जो अनेक देवी देवताओं को पूज रही है. It is in the today's world, where they worship numerous male and female deities. अनेक देवी देवताओं के स्वरूप में बुद्धि लगा रही है. The intellect is involved in numerous forms of male and female deities. बुद्धि डिस्टर्ब हो चुकी है. The intellect has been already disturbed. बेविचारी बन चुकी. It has become adulterated. तो वो आदि वाली जो आत्मा है द्वापर युग के आदि में जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है. So that soul from the beginning, whom Abraham entered in the beginning of the Copper Age, वो आदि से ही देह अभिमानी बन पड़ता है. became body conscious from the very beginning. और राम कृष्ण की आत्माएं शुरुआत से ही देह अभिमानी नहीं बनती. And the souls of Ram and Krishna don't become body conscious from the very beginning. वो अंतिम जन्म में आकर के बोझा खा जाते हैं. Having come into last birth, they get twisted up. तो देह और देह के संबंध उनको अभी त्यागना पड़े. So one will have to renounce the body and the bodily relationships. देह बनती है माता से. The body is made from the mother. और आत्मिक स्वरूप जो आता है जो उसमें देह में प्रवेश करता है. And the spiritual form which enters the body, बच्चे के रूप में जन्म लेता है. जो आत्मा सारा कार्य करने वाली है वो आत्मिक स्वरूप आता है बाप से. and is born in the form of a child, the soul who does all the work. That spiritual form comes from the father. बाप होता है बीज और माँ होती है धरणी. The father is a seed and the mother is earth. इसलिए गीता में बोला है. That is why it is said in the Gita. ये सृष्टि ये पृथ्वी माता है. This world, this earth is a mother. इस पृथ्वी माता में अहम बीज प्रदपिता गीता का ये श्लोक है. In this mother earth, aham bij pradapita, this is one verse from the Gita. मैं इस धरणी माता में आकर के बीज डालता हूँ. I come and sow a seed into this mother earth. बीज प्रद Bij prada. ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूँ. I am the father who sows the seed of knowledge. यज्ञ के आदि में ऐसे हुआ. It happened like this in the beginning of the yajna. वो सुप्रीम सोल बाप ने That supreme soul, father, जो सारी सृष्टि का बीज मनुष्य सृष्टि का बीज राम वाली आत्मा है उसमें प्रवेश करके who enters the seed of the entire world, the seed of the human world, the soul of Ram, और धरणी माता का जो मानिंद स्वरूप है, दिल्ली कहो, पृथ्वी माता कहो, गीता माता कहो, उसमें ज्ञान का बीज डाला. and sows the seed of knowledge in the form who is like the Mother Earth. Call her Delhi, call her the Mother Earth,
call her the Mother Gita. वो ज्ञान का बीज उस समय विस्तार को पाया हुआ नहीं था. The seed of knowledge had not expanded at that time. जब विस्तार ही नहीं है तो सार कहाँ से निकलेगा? If there is no expansion, from where will the essence come out? बिना विस्तार के सार निकलेगा क्या? Will the essence come out without expansion? वृक्ष पूरा बड़ा नहीं होगा, If the tree doesn't grow up fully, पूरी आयु नहीं होगी तो उसमें बीज तैयार हो जाएगा क्या? फल तैयार होगा? if it is not of the age, will the seed be ready in it? Will any fruit be ready? आम का बीज है, Supposing there is a mango seed. पूरा विस्तार को नहीं पाएगा, वो आम का वृक्ष है, तो उसमें से बीज निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा. If that mango tree doesn't reach its full expansion, will the seed come out of it? It won't. तो यज्ञ के आदि में वो ज्ञान विस्तार को नहीं पाया हुआ. So, in the beginning of the yajna, that knowledge didn't get its extensive form. विस्तार को न पाने के कारण Because it didn't get the extensive form, वो आत्माएं ज्ञान में अधूरी थी, जिनको ज्ञान की जरूरत थी. those souls who needed knowledge remained incomplete in knowledge. वो मन बुद्धि रूपी आत्माएं, Those souls in the form of the mind and intellect, सूर्यवंशी आत्माएं जो संपूर्ण 100% आत्मा बनकर के रहती है इस सृष्टि पर ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक. the souls of the Sun dynasty, who become 100% complete souls and remain in this world for the longest time, उनको आत्मा का वो भोजन, बुद्धि का भोजन नहीं मिला, इसलिए वो टूट पड़ी. didn't receive the food for the soul, the food for the intellect. That is why they broke off. अब टूट पड़ी, They broke off. कारण या कारण टूट पड़ी. For some reasons, they broke off. तो बाबा ने मुरली में बोला कि राम फेल हो गया. Then Baba said in the Murli, Ram failed. राम फेल हो गया Ram failed. माना क्या फाइनल में फेल हो गया? Does it mean that he failed in the final examination? फाइनल एग्जाम तो अभी तक भी नहीं हुआ. 70 साल हो गए यज्ञ को. The final examination hasn't taken place yet. 70 years have passed in the yajna. जो शुरुआत का एग्जाम था, मासिक, त्रैमासिक, उसमें फेल हुआ. The examination of the beginning is like the monthly, the semester. He failed in that. तो ये कोई घृणा की बात नहीं है, This is nothing to be held in contempt. नीची दृष्टि से देखने की बात नहीं है. अरे राम तो फेलियर आत्मा है. This is nothing to be looked at with disdain. Ram is a failure soul. अरे तुम कौन पास आत्मा हो? Who among you is the soul who has passed? पास तो अभी कोई हुआ ही नहीं. फाइनल पेपर कहाँ निकला? Now there is no one who has passed. Where has the final paper come out? फाइनल रिजल्ट अभी कहाँ निकला? Where did the final result open now? तो वो राम वाली आत्मा So that soul of Ram, जो आदि में बीज थी, who was a seed in the beginning, वो बीज गुप्त हो जाता है, that seed becomes hidden, झाड़ बढ़ता है ब्राह्मणों का. and the tree of the Brahmins grows. से बीज धरने में बोया जाता है तो बीज का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है या बीज चलता रहता है? Just like when the seed is sowed in earth, does the existence of the seed come to an end or does it last? बीज सड़ जाता है क्या? वो अपनी हस्ती को खत्म कर देता है. The seed decays, it lets its existence come to an end. कहते भी है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा जाए. They say, finish off your personality if you want a position. बीज अपने को धरणी में मिला देता है, खाक में मिला देता है. The seed merges itself with earth. It merges with ash. कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. The grains merge with the ash and the flower garden appears.
जब तक अपनी हस्ती को मिटाया नहीं है, as long as one hasn't removed his existence. वो थोड़ा सा तना अपने पास बचा के रख लिया, कहीं बर्बाद ना हो जाए, ईश्वरीय सेवा में ज्यादा नहीं लगाना। If one has saved a little part of the body and kept it, just in order not to let it get destroyed, not to give more in the godly service. थोड़ा सा धन अपने पास बचा के रख लिया, अरे आई वेले काम आएगा, दुनिया में विनाश होने वाला है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, तो अभी सारा सेवा में मत लगाओ। One saved a little wealth and kept it. Oh, it might come off use on time. The world is going to get destroyed. The prices will increase a lot. So now, don't give everything in the service. ईश्वरीय सेवा में सारा धन लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बचा के रखो। It isn't necessary to invest all the wealth in the godly service. Save a little bit and put it away. तो कहेंगे पूरा स्वाहा हुआ। So, will it be said that it is the complete sacrifice? राख बना? Did he become ash? नहीं। No, he didn't. इसलिए शंकर है जिसको भभूत दिखाई जाती है, राख ही राख लपेटे हुए। That is why Shankar is the one who is shown smeared with ash. वो साधु संत सन्यासी क्या करते हैं? What do those holy men and ascetics do? राख लपेट लेते हैं। They get smeared with ash. अब राख लपेटने का अर्थ तो जानते नहीं। But they don't know at all the meaning of smearing ash. राख लपेटने का अर्थ है, The meaning of smearing ash जो अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला आप देखेंगे, is what Baba said in the Avyakt Vani. Now we'll see. कोटों में से कोई कितने निकलते हैं और कौन निकलते हैं? How many out of millions emerge and who are the ones who emerge? क्या? लाखों में से एक? What? One among 100,000s. कौन निकलते हैं? Who emerges? और खाक बनने वाले कौन निकलते हैं? And who emerges who becomes ash? खाक माना? राख। Ash means cinders. अपने को राख कौन बनाते हैं? Who makes oneself ash? तन से भी राख बनाते हैं, धन से भी राख बनाते हैं। Who will reduce their body into ashes? Who will reduce their wealth into ashes? मन भी सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दें। Who will involve the entire mind into the godly service? दूसरी बातों में कहीं मन न लगे। The mind shouldn't get involved in other things. संबंधियों की ताकत भी सारी ईश्वरीय सेवा में लगाने का प्रयास कर लें। One should make effort to involve the entire power of the relationships into the godly service. जो भी संपर्क में आने वाली आत्मा है, वो जो भी संपर्क में आए, जैसे ऑफिस में बैठे कोई संपर्क में आया बातचीत करने, उसको भी ज्ञान दे दिया। With whichever soul one makes contact, with whomever one is in contact, just like they are sitting in the office, someone has come to have a chat, and one narrates knowledge to him also. तो संपर्कियों की भी सारी ताकत, जो भी संपर्क में आने वाली आत्मा है, उनको भी संदेश दे रहा है। The entire power of the contacts. One gives the message to everyone with whomever one is in contact. ये सारी ताकत और समय की भी सारी ताकत। The entire power and the entire power of time. चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे शरीर की परवरिश कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो हर समय श्वासोश्वास बाबा की याद में हो। Whether we are eating, whether we are taking care of the body, taking a medicine, all the time, in every breath, we should be in the remembrance of Baba. तो जैसे खाक बना दिया, So it is like having made oneself ash. राख बना दिया, It is like having reduced oneself into ash. ऐसी राख बनने वाली जो सारी सृष्टि की बीज रूप बाप आत्मा है, राम बाप जिसे कहा जाता है, वो खाक बन जाता है। The Father, the seed soul of the entire world, the one who is called as Father Ram, becomes ash.
इसलिए इस संगम युग में वो शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है. That is why in the Confluence Age he is revealed in the world under the name and the form of Shankar. जिस शंकर की यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं बभूत लपेटे हुए. Whose memorial is shown in the scriptures. He is smeared with ash. राख लपेटे हुए. He is smeared with cinders. राख की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अपने स्वरूप को राख बना दिया. It is not about cinders, but about that he reduced himself to ash in his real life. और वो अकेला नहीं होता है. And he is not alone. उसको फॉलो करने वाले भी बच्चे निकलते हैं. The children who follow him emerge as well. वो है एडवांस पार्टी. They are the advanced party. उस एडवांस पार्टी में से जो 108 रत्न निकलते हैं, The 108 jewels that emerge from among this advanced party, 108 मण के निकलते हैं, वो सब बाप समान बनने वाले हैं. नंबर 1 108 beads emerge. All of them become like the father number-wise. इसलिए सारी दुनिया में वो माला, This is why in the entire world that mala, संगठन जिसकी यादगार है, वो संगठन रूपी माला आज दुनिया में स्मरण की जाती है, सिमरण की जाती है. which is a memorial of the gathering, that mala like gathering is recollected in the today's world. It is remembered. हिंदू भी सिमरण करते हैं, मुसलमान भी सिमरण करते हैं माला का, क्रिश्चियंस भी माला का सिमरण करते हैं, बौद्ध भी सिमरण करते हैं. एक नास्तिक है जो माला का सिमरण नहीं करते. क्यों नहीं करते? The Hindus recollect it. The Muslims recollect the mala. The Christians recollect the mala as well. And the Buddhists recollect it as well. Only the atheists don't recollect the mala. Why don't they do it? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया का सारा सुख अंत तक लिया. It is because they had taken the happiness of this world till the end. भगवान ने जो नई दुनिया बनाई उसकी उन्होंने परवाह नहीं. They didn't care about the new world which God had created. नास्तिकों का तो गुण धर्म ही होता है. क्या? Atheism has its qualities as well. What? यावत् जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे. जब तक जिंदगी में जियो सुख पूर्वक जियो, शरीर को खूब सुख दो. क्या? As long as you live your life, live blissfully, give the body a lot of happiness. What? और संसार से कर्जा लेते रहो और अपना काम चलाते रहो. And keep on taking credit from the world and keep on doing your work. शरीर छूट जाएगा, सारी दुनिया खलास. When the body leaves, the entire world is over. फिर कुछ नहीं बचा. Then nothing remains. मानव वो पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानते और वास्तव में उनके पुनर्जन्म होते ही नहीं जाता. It means that they don't believe in rebirth at all, and in reality they don't have many rebirths. वो तो आखिरी धर्म है. That is the last religion. 100 वर्ष के अंदर लेनिन स्टालिन आए, उसके बाद वो नास्तिक धर्म स्थापन हुआ. Lenin and Stalin came within last 100 years, and after that the atheistic religion was established. तो उनको वो सुख का वर्षा नहीं मिलता जो भगवान आकर के देते. They don't receive that inheritance of happiness which God gives when He comes. वो सुखदाता बाप जो सब धर्मों में गाया हुआ है. That Father, the giver of happiness, is praised in all the religions. गॉड फादर को सब धर्म वाले मानते हैं. The followers of all the religions believe in God the Father. उसको वो नास्तिक नहीं मानते. The atheists don't believe in Him. फिर भी बाप की महानता देखो. Even though, look at the greatness of the Father. ये जो झाड़ का चित्र बनाया हुआ है, सब धर्म दिखाए हुए हैं, उनमें सबसे नजदीक किसको बैठाया है? All the religions are shown in the picture of the tree that has been prepared. Who is seated closest to the Father in it? उस नास्तिक बच्चे को बैठाया हुआ है. That atheist child is seated the closest.
क्यों बैठाया हुआ है? Why is he seated like this? है कोई कारण होगा? There must be some reason. एक कहावत है, There is a proverb. काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बना देना पड़ता है। In order to get the work done, one has to make a donkey his father. जो गाय ज्यादा दूध देती है, उस दूध देने वाली गाय की लात भी सहन करनी पड़ती है। One has to tolerate kicks of the cow which gives a lot of milk. तो बच्चा सबसे बड़ा काम करता है। That child does the greatest work. सारी सृष्टि का विनाश करने में सहयोगी बनता है। He becomes an assistant in the destruction of the entire world. एक तरफ भगवान इस सृष्टि पर आते हैं सन 36-37 में। On one side, in 36-37, God comes to this world. और दूसरी तरफ उस बच्चे को बाप प्रेरित करते हैं। And on the other side, the father stimulates that child. एटॉमिक एनर्जी तैयार करो। Prepare the atomic energy. उससे पहले किसी की बुद्धि में नहीं था दुनिया में। Before that, no one in the world had the faintest idea कि एटॉमिक एनर्जी चीज क्या होती है। what kind of thing the atomic energy is. जब से भगवान आए नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, When God came to establish the new world, तभी से वो नास्तिक धर्म की आत्माओं की बुद्धि में ये बात आने लगी। from that time, this issue starts emerging in the intellect of the souls of the atheist dharma. इस दुनिया का संहार करने वाला अस्त्र शस्त्र कौन सा तैयार किया जाए? What kind of weapon for the final destruction of this world should be invented? सन 42 में 45 में वो पहला विस्फोट हुआ हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। The first explosion took place in 1942-45 over Hiroshima and Nagasaki. वो तो छोटी छोटी बम्बियां थी 20 मेगावाट की। They were little bombs of 20 megawatts each. अभी तो हजारों हजार मेगावाट के पावरफुल ऐसे बम तैयार हो चुके हैं जिनसे ये दुनिया बटन दबाई और खलास हो सकती है। Now such powerful 1000 megawatts bombs are prepared that having pressed on the button, one can finish this world through them. लेकिन भगवान आया हुआ है, अपने सब बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। But God has come. He has come to give all his children the inheritance of liberation and the liberation in life. 500-700 जो भी करोड़ 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उन सबको वो वर्षा मिल रहा है। There are 5-7 billion human souls. All have to receive that inheritance. किसी को कम, किसी को पूरा 100%। Some less, some full, 100%. तो वो सुख शांति का वर्षा लेने के लिए टाइम तो लगेगा। It will take time to take that inheritance of happiness and peace. या फूंक मारते नई दुनिया बन जाएगी और बिगड़ जाएगी। Or will the new world be made and destroyed in one blow? वो 100 साल का टाइम लगता है। It takes 100 years. और धर्म पिताएं आते हैं। Other religious fathers come. उन्होंने भी आकर के 100 वर्ष के अंदर अपने धर्म की स्थापना की है। Having come, they have established their religions within 100 years. इससे जास्ती टाइम कोई नहीं लगाता। No one takes more time than this. भगवान भी सृष्टि पर आकर के 100 वर्ष के अंदर इतना बड़ा कार्य करके जाता है। Having come on this earth, God also performs a great task within 100 years, and then he goes away. ये सारी पुरानी दुनिया, सारे पुराने धर्म, डेविल धर्मों का विनाश और डीटी धर्म की स्थापना करते हैं। He destroys the entire old world, the old religions, the devil religions, and he establishes the deity religion. वो कहेगा सारे डेविल धर्म है। Someone may say, are all devil religions? क्या ब्रह्मा को भी उस गिनती में गिनेंगे? Will Brahma be included in this calculation too? अरे ब्रह्मा का तो टाइटल ही गधा दे दिया, बच्चा बुद्धि दे दिया। Well,
Brahma was even given the title of a donkey. He was given the title of a child intellect. रावण का जो सिर बनाते हैं 10 सिर, उन 10 सिरों के ऊपर किसका सिर दिखाते हैं? गधे का सिर दिखाते हैं। वो गधा कौन है? They make the Ravan's head, 10 heads. Whose head is shown on the top of those heads? A head of a donkey. Who is that donkey? वो गधा वो है जो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यज्ञ के याद में अगर ब्रह्मा ने भगवान के स्वरूप को पहचाना होता तो उसको छोड़ करके यज्ञ में से जाने ही नहीं देता। That donkey is that one who can't recognize the form of God. Had Brahma recognized the form of God in the beginning of the yajna, he wouldn't have let him go away from the yajna. और बच्चों को सपोर्ट नहीं करता। And he wouldn't have supported the children. गधा बुद्धि होने के कारण ऐसा। It happened because of having a donkey-like intellect. अभी भी कृष्ण की सोल, Even now, the soul of Krishna इतना ज्ञान मिल रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है, तो भी गुलजार दादी में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं। is receiving so much knowledge, and yet he goes and enters into the Gulzar Dadi. वही गुलजार दादी, वो छोटी बच्ची जो यज्ञ के याद में बहुत आकर्षणमयी छोटी बच्ची थी, ब्रह्मा बाबा उसको बार बार अपनी तरफ बुलाते थे और वो भाग जाती थी। It is that Gulzar Dadi, that little girl, who was a very attractive little girl in the beginning of the yajna. Brahma Baba used to call her again and again, and she used to run away. बाबा के पास कभी आई नहीं। बाबा उसको अति प्यार करते थे। She had never come close to Baba. Baba used to love her extremely. तो अंतमते सुगति हो गई। It happened, Antmate Sogate. The final destination is according to the final thought. वो लगाव जब सूक्ष्म शरीर धारण किया तो वो लगाव को पूरा करना शुरू कर दिया। That attachment, when he took on the subtle body, he began to fulfill that attachment. अभी तक भी वो लगाव नहीं खत्म हो रहा है। Even now, that attachment hasn't been finished. अभी अभी राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं, बीज रूप स्टेज बनती है और वो देह का लगाव आता है तो वहां जाकर के फिर प्रवेश कर जाते हैं। Right now, he enters into the soul of Ram and takes on the seed form stage. And when that bodily attachment comes, he goes there and enters her again. ये चंद्रमा का वास तो होगा। When will this moon set? जब ब्रह्मा की बुद्धि में वो गीता का भगवान उदय होगा। When that God of the Gita arises in the intellect of Brahma, तो चंद्रमा जो अधूरा चंद्रमा है वो अस्त हो जाएगा। the moon, that incomplete moon, will set. अधूरा चंद्रमा का रूप नहीं रहेगा। The form of the incomplete moon will not remain. संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। The moon will become complete. पूर्णमासी होती है ना। There is the full moon, isn't it? दूसरे धर्म के लोग पूर्णमासी को नहीं मानते हैं। People of the other religions don't recognize the full moon. किसको मानते हैं? जो अधूरा चंद्रमा है उसको मानते हैं। Whom do they recognize? They recognize the incomplete moon. चाहे बौद्ध धर्म के लोग हों, Whether Buddhist चाहे मुसलमान धर्म के लोग हों, or Muslims. उनके झंडे में कौन सा चंद्रमा का रूप दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा। जब तक अधूरा है तब तक उनका काम बन रहा है। What is the form of the moon shown in their flag? The incomplete moon. As long as the moon is incomplete, he is useful for them. और जब संपूर्ण बन जाएगा When he becomes complete, तो फिर वो बाप का बन जाएगा। he will belong to the Father. बाप की रहबरी में आ जाएगा। He will remain under the protection of the Father. फिर वो हमारी बात मानने वाला नहीं। Then he won't listen to them.